Welcome back, investors and traders. I'm your host, Dr. Seema Jain, and welcome back to the channel Stock Pro. And I made a video for you people about Nifty and Bank Nifty range. If you notice, Nifty bounced back from the same levels which we discussed, 17,050, and it is going to oscillate between 17,450 to 17,000. That's going to be the range of Nifty. And the bounce of today has been extremely positive bounce in spite of all international scenario being negative. Nifty has given a very beautiful recovery, and so was the Bank Nifty, a very nice recovery. Keeping in mind that the market stance could be positive, what I have done, I have filtered 3-4 stocks for you. To begin with, first stock that looks very good to me is Persistent System. So above 343580 to 3590 is going to be your buy range. 10 points buy range. Why? The simple reason, this inside candle and today's powerful buying, even when it opened little low, that shows the strength of the stock. So above 3585 to 3590 is going to be your buy range, and your target could be, first target could be somewhere around this point, or maybe this point, which is 3650, then 37,000, then after that your next target could be 3738, and after that will be 3800. Your stop loss could be today's low. I mean, it's little low, it's quite deep stop loss, but let's keep a stop loss of 3500. So that's the first stock on my radar. And the other stock that I find looking very good is GALE. Have a look at the GALE. The price formed a channel, right? Price is forming a channel. And today this open equal to low, which kind of negated all the other price. Like, have a look at it. This was the indecisiveness in the price. See here, all these are indecisive candle. GALE went up, came down, then indecisive, then positive, then negative, then positive, negative, positive. But today it has been so powerful that it just demolished all the uncertainties in the market. So where does it look good for a buying opportunity? Above 90. It looks pretty good, and short-term target could be 93, 94. Those could be short-term target, but in case you're looking for a month and a half target, then 97, 98, 99 and 100 could be your final target, because 100 being a round figure and a lot of option writers will be active. I don't think so this month we're going to achieve 100, but next month, next to next month, there is a possible. So 97, 98 is a very strong resistance. That's the place you've got to be extremely careful. But in case it crosses that point, which is 97, 98, you got to be extremely careful. It may go further 2 points up, because I'm sure, suppose I'll tell you one thing. Suppose price goes from here, let's say this place to this place, which is 97, 98 in this month, right? Let's say by the middle of next week, what will happen? These 100 rupee call writers will become very aggressive, because the call prices will go up, and these 100 rupee call writers will become very aggressive. When they will become aggressive, it simply means that they will not let the price go above 100 rupees. So that is why this month's target doesn't look to be crossing above 100. All right, now the next stock that looks good to me, it is Tata Communication, right? Tata Communication, INDUSIND Bank and Bajaj Finance. These are the three stocks which are looking good to me. So Tata Communication, here is Tata Communication. Have a look at the price. Price formed a range. Price formed a range. Then there was a gap up opening here. The gap up opening was sustained the next day. The low of the, see, I want you to focus here and see, this is the low of this candle. Next day a negative candle formed, but the low of this candle is not broken. Then next higher low, then higher low. So this, and today it closed very close to the previous resistance.
So crossing today's candle will lead the stock in further up move. Crossing today's candle high, which is crossing 101,236 or 1,237, or I would say I'll round it off to 1,241. Above 1,241, a target of 1,275 is looking very, very possible. So that's my third stock. The next stock that I have on my radar is INDUSInd Bank. INDUSInd Bank. So INDUSInd Bank has been developing slowly, gradually. The stock has been developing, and it's making higher lows, right? And higher lows. But there is only one place where it has broken the low. But where do we look for a good opportunity to enter? It's 1,235. Above 1,235, we can find a very good and interesting entry into the stock for a target of surely a target of 40 points, which is 1,275. And if 1,275 is crossed, 1300, 1350, 1400 are easily achievable in INDUSInd Bank. So be careful in your entries, because जब मैं आपको entry देती हूँ, आपको entry carefully लेनी है. You got to wait for stock to sustain above those points. When I say sustain means 15 मिनट तक stock को उस price के ऊपर रहना चाहिए. लास्ट स्टॉक जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस. द स्टॉक इज बजाज फाइनेंस. आज इसने गैप डाउन करके एक डोजी बनाई है, और अगर कल किसी तरह हमको एक गैप अप ओपनिंग मिलती है और गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है which is 7,400, then I'm expecting the stock to move up to 7,500, 7,600 and 7,700, and crossing those levels in a day is not very difficult for Bajaj Finance. The only thing is it has to sustain above 7,400. So if there is a gap up opening tomorrow and the price sustain itself above 7,400, we can surely expect a move till 7,700. Once again हिंदी में आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं, कि अगर ये स्टॉक है बजाज फाइनेंस में आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद स्टॉक ने अपने आप को कवर करने की कोशिश की है, और अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये बैरियर पिछली कैंडल का क्रॉस हो जाता है जो कि 7,400 है, then I'm expecting 7,500, 7,600, 7,700. ये टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं. तो ये एक स्टॉक था, और उसके अलावा जो मैंने और स्टॉक दिए हैं वो भी मैं क्विकली आपको बता देती हूँ. मैंने आपको एक स्टॉक दिया है परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, और आज ये जो आज की कैंडल है उसने गैप डाउन खुलने के बाद भी इस प्राइस को, let me just make it very clear to you, गैप डाउन कल यहां से गैप डाउन खुला और उसके बाद भी इस इनडिसाइसिव कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है. मतलब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब इनडिसाइसिवनेस खत्म कर दी है कंप्लीटली. और उसके बाद मार्केट अगर कल के दिन टुमारो high is broken, which is 3,585 is broken, you can expect a movement till about 3,650, 3,700 and so and so forth. और एक और स्टॉक जिसकी मैंने बात की है वो है गेल इसलिए कि गेल एक चैनल में था, और एक अगर मैं इंडिसाइसिवनेस का बॉक्स बनाती हूँ तो उसको आज इसने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया. तो 99 के ऊपर एक टारगेट जो है 93 का, फिर 97 का, और 97 और 98 अगर क्रॉस हो जाता है तो 100 का टारगेट इसमें डेफिनेटली आता हुआ दिखता है. तो ये 4-5 स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, आप अपने रडार पे रखिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एंट्री लीजिए. हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपका प्रॉफिट भी आपके हाथ में है और आपका लॉस भी आपके हाथ में है. प्रॉफिट कैसे आपके हाथ में, कि आप कहाँ बुक करते हो वो आपकी चॉइस है. आप 1-2 पॉइंट बुक करते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स बुक करते हो, ट्रेल करते रहते हो और ऊपर ले जाते हो, वो आपकी चॉइस है. या आप यू आर अ ट्रेडर फॉर, यू आर अ स्कैल्पर, मतलब आप बहुत छोटे समय के लिए अपने ट्रेड को रखते हो, वो चॉइस आप खुद बना सकते हो. तो ये 5 स्टॉक मैं आपको फिर से बता देती हूँ. परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा कम्युनिकेशन, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस एंड गेल, ये 5 स्टॉक्स है मेरे रडार पे कल के लिए.
अगर आपको मेरा रिसर्च अच्छा लगता है, आपको मेरे साथ ट्रेड करना अच्छा लगता है, तो रोज मुझे आप 10 से 11 ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपनी टीम के साथ मॉर्निंग में ट्रेड करती हूँ। लोग बहुत पैसा बनाते हैं और आप एटलीस्ट आपको मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे रीड करने हैं वो आपको पता लगेगा। तो ज्वाइन मी फ्रॉम 10 to 11. The link is going to be in the description box, and do talk to my team in case you need any support. All the best. See you tomorrow in the next video.